Last NCERT exercise 5.3, question number 3, seventh part. In an AP given A equal to 8, AN equal to 62, SN equal to 210, find N and D. AP में है हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 8, nth टर्म दे रखी है 62 और सम ऑफ n टर्म दे रखा है 210। तो हमें क्या यहाँ फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू और d की वैल्यू। Let us solve this question. Given sum of n terms that is equal to 210, we know the formula Sn equal to n by 2 a plus l. Here an l equal to 62, n upon 2 a plus l, that is equal to 210, n upon 2 a यहाँ पे है 8, l that is 62, it's equivalent to 210. Now we have n by 2 70 equal to 210. Now we can write n by 2 multiplied by 70, that's equal to 210. Divide 70 with 2, we have 35 and that is equal to 210. So we can find n equal to 210 upon 35. Divide both sides by 7. Now again divide with 5, we have 6. Now the value of n, that is equal to 6. Now what we have to find out? We have to find out the value of d. n तो हमारे पास आ गया, अब d के तो n दे रखा है हमें, n equal to 62. We use the formula an equal to a plus n minus 1 d, that is equal to 62. तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, that's a जमा n कितना है 6 minus 1, डिफरेंस a plus 6 minus 1 d equal to 62. तो a की वैल्यू दे रखी है हमें 8 प्लस 5 d इक्वल टू 62, 5 d इक्वल टू 62 माइनस 8, 5 d इक्वल टू 54, d इक्वल टू 54. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस d equal to 54 upon 5. That's your answer.